लिख लिए? सर डायनामिक वर्क प्लेस के बाद ये लिखा था सर। यस। किसी को इसमें से थ्रेट हुआ, कुछ भी हुआ तो वायलेंस स्टार्ट होता, एक दूसरे से भी हो सकता, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों में। Or whoever the cause is, workplace violence is never accepted or tolerated. There is no foolproof way to predict someone's behavior. There might be warning signs, but there's no specific description of someone who might be dangerous. Violence and anger include verbal and emotional abuse or threats, and the physical attack to someone or property from another person or group. The effect of violence on a victim depends on the harshness of the act and the victim's person or group. The effect of violence on a victim depends on someone or property from another person or group. The abuse or threats, and the physical attack to someone or किसको बोलते हैं? वर्बल और इमोशनल अब्यूज और थ्रेट और फिजिकल अटैक टू समवन और प्रॉपर्टी फॉर अदर पर्सन। ठीक है, लिखना है सर इसको। यस। Any verbal also or emotional abuse also at workplace. काम करे से आप अच्छा ठीक है, निवेश के सॉफ्ट कॉपी भी आ गए, हार्ड कॉपी में थोड़ा सा बाहर हो सिटी के, मैं भी भेज रहा हूँ। सर आप ऑफिस में है सर, ऑफिस से बाहर है सर? यस। or on the phone, written abuse, harassment, threats, ganging up to bully or scare someone, physical or sexual attacks, armed robbery, harmful damage to property. These are the acts or categories of violence. Verbal abuse in person or on the phone. Written abuse, harassment, threats, ganging up to bully, डराना करना होता है ना, physical or sexual attacks, armed robbery, harmful damage to property of staff, customers or the business. This all includes in the violence acts. Please write down, make it fast.
यस, ऑफिस के मशीन ना तोड़े, करे झगड़ा करे भी तो आता, वो भी कैटेगरी हार्मफुल डैमेज है ना प्रॉपर्टी। ऑफिस का कोई चीज तोड़ दिया, मशीन तोड़ दिए, वर्कर्स वायलेंस में, तो छोड़ते क्या एम्प्लॉयर? सर। Gang up and bully or scaring someone. Gang up na tank na धमकाना लोगों को. बैक्स का भी हाईलाइट दिख रहा था. हैदराबाद के यहाँ बैक्स अपने लोगों को आदत रहती घूर के देख रहे थे भी क्या देख रहा है मैं यहाँ बोल के वो भी थ्रेट्स में लिख होता है. लिए? यस सर, हो गया Over. सर। यस सर। सो ऑल ऑफ यू क्लियर दैट वर्बल अब्यूज, किसी को थ्रेट करना, गालियां देना, झगड़ा करना भी पर्सनल, इन पर्सन और फोन पे भी क्या होता है? वो वायलेंस एक्ट है। अब्यूज करना, हरासमेंट करना, थ्रेट्स वर्क प्लेस पे, तो दीज आर ऑल द अनसेफ कल्चर ऑफ द वर्क प्लेसेस। अनसेफ, uncultured workplaces leads to many issues develops, and some sort of injuries, harm, losses also occurs because of these or some few of these reason or any of these reason also sometimes. Of staff, customers, or the business. Workplace violence may not always seem like an extreme situation from the beginning. It can sometimes follow a pattern of behavior that grows in its level of danger. It can start from distress, anger or frustration, and scary body language and turn into verbal or written abuse and threats, physical threats and assault, i.e. an attack. ये क्यों होता है? It can start from distress, anger, frustration, or scary language, or sometimes written or verbal threats, or sometimes physical assaults. ये क्या है? वर्कप्लेस के वायलेंस है, लोन वर्कर्स और जेंडर चेंज वर्कर्स, और समटाइम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, समटाइम डिफरेंट डेमोग्राफिक, और समटाइम स्ट्रेस ऑफ वर्क, all leads to, these keys they to have some event or issue. There are two reasons for workplace violence. Material gain. This is when the offender wants money, drugs, or valuable goods and they use violence to get it. Non-material gain. This includes sexual attacks, taking hostages, and the incidental attack on people in a direct area in the workplace. Sometimes, unwelcome behavior appears as discrimination or verbal and sexual harassment. It could be from staff, clients, customers, or the public. While this behavior is inappropriate and stressful, they don't always come with anger and violence. Nonviolent discrimination or harassment should be dealt with as early as possible so they don't become more serious or lead to violent behavior. Workplace bullying is angry behavior that scares, embarrasses, and weakens a person or group. Bullying is the repeated, unfavorable treatment of a person by someone or a group of people in the workplace. It is always unreasonable and inappropriate. Examples of bullying at work include yelling, screaming, abusive language, always criticizing someone, isolating or ignoring a worker, and damaging someone's work or ability to do their job by not giving them important information, proper training, and resources. Bullying comes from someone or a group needing to have power or to show superiority over someone else. समझ में आ रहा है ना? ये रीजंस होते हैं कभी कभी इस तरह के, या सिमिलर रीजंस होते हैं। ये भी जो है ना, अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस या अनसेफ वर्क एक्टिविटीज और अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट की रीजंस, ये एग्जांपल्स आपके सामने आते हैं, और ये भी रिस्क है वर्क कंपनी। Source Place violence.
any one or a mixture of these situations on the business or employee. Attacks can seem random but are usually planned. The offender knows your business has something they want. They will go where security and violence control measures aren't very good. Offenders may not be rational when they attack or could be drunk or on drugs. Some offenders could be interested in non-material gain. An example of that is sexual assault. Sex offenders may watch victims, plan the attack, or choose victims at random when they get the chance. Working alone, leaving work at night, and traveling home alone can be big risks. Extreme environments of workers being overloaded with work and overly pushed to perform by supervisors can also cause workplace violence. When people commit दो रीजंस क्लियर है यहाँ पे, लोन वर्किंग हो या फिर वर्क ओवरलोड भी एक रीजन होता है. हम समझते हैं कि रीजन नहीं है ये, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी इफेक्ट. वर्कलोड की वजह से सुपरवाइजर आके कुछ बोल दिया, इफ ही थ्रेट टू वर्कर, समटाइम वर्कर सडनली व्हाटएवर जो भी आजू बाजू अवेलेबल है, नाइफ है, रॉड है, कुछ भी है, उससे झगड़ा हो जाता, मारता. सो दीज आर द इनविजिबल हैजार्ड्स और रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद वर्क एक्टिविटी वेयर इज ए अनसेफ कल्चर और poor practices becomes customs or regular acts. So this why management has always required to have a what called as policies and procedure to communicate harassment policies, all things like this. Okay, workplace safety policy, harassment policy, and ensure that all employees aware of the policy and understand the consequences if violated. Harassment policy क्या है? एग्जाम्पल है आपका, जो दोस्त है वो स्टडीड इन द कॉलेज में आज से 5-10 साल पहले रैगिंग होती थी, उन्हें इसको मारता था, उन्हें इसको छेड़ता था, झगड़े होते थे. आजकल हो रहे? नहीं सर, बहुत कम हो रहे सर. बहुत कम हो गए ना, क्योंकि हम लोग सुधर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, डेवलप नेशंस. Understand? Knowledge come with the light and education, so the system and processes improves where safety and culture mix together, the outcome of the result is good. So that's why we are developing the practices and understanding the workplace safety management procedures and guidelines, which include harassment policies required to developed by the management and addressed to all the employees, workers, staff, contractor, subcontractor, visitor, guest, security people, सबके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे. उसको क्या करना होता है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. कोई किसी से इश्यू पैदा हुआ तो आके मैनेजमेंट को या इंचार्ज को बताना, आपस में झगड़ा नहीं कर लेना. फॉर एग्जाम्पल, या उन्हें उठा के इसको नहीं मारना. अगर कोई कुछ बोला आके आप रिपोर्ट करिए. These are the few guidelines which can include in the policies and procedures to develop a safe work environment. There are so many sections: ILO guidelines, OSH section, HSC regulations, okay, conventions are there, HSC acts are there, safety and culture, workplace freedom acts. There are so many things are there, workers acts, regulations, which gives clear policies, and management has to arrange, organize and implement these policies in the workplaces. They are in that work areas. जहाँ मैनेजमेंट का जो अपना, जैसा कॉलेज है, कॉलेज के अंदर उसकी लिमिट है ना, बाहर तो पुलिस देख लेती, लेकिन कॉलेज के अंदर क्या होता, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता. वहां पर जो भी काम या हरासमेंट या रैगिंग होती है कॉलेज में, फॉर एग्जांपल, उसी तरह से कंपनी में भी मैनेजमेंट और सेफ्टी डिपार्टमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस इश्यूज टू कंट्रोल सेफ एंड healthy manner. Training programs, we have to develop training programs for our workers, employees, and for visitors and guests, and explain them, brief them the harassment policy and consequences, और do's and don'ts. क्या हो गया अगर कोई कुछ ऐसे करते तो क्या होगा, और अगर आपस में झगड़ा होने की बात आ रही है तो किसको रिपोर्ट करना, जाके क्या करना. Understand? And that is the way that we can develop a culture which has the values and diversities and respect of all individuals regardless caste, color, creed, sex and religion in the workplaces. Understand? समझ में आ रहा आप लोगों को? इस समझाने का, बताने का, एग्जाम्पल देने का मतलब ये होता है कि आपके पास क्लैरिटी रहे टॉपिक की, और टॉपिक में अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन करे, कम से कम बेसिक चीजें आप फंडामेंटल बता सकना. यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन सम सॉर्ट ऑफ थिंग इन योर ओन लैंग्वेज, एटलीस्ट आपकी अपनी जबान में, तो कम से कम वर्कप्लेस हरासमेंट क्या है, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए. अब बुलिंग करेंगे या नहीं तो रैगिंग करेंगे या फिर जो थ्रेट करेंगे, टीजिंग करेंगे तो क्या होगा.
These are the things you have to understand clearly, and the risk factors associated with that. How this happens and what are the prevention measures which we are going to discuss. मैं आपको notes दूंगा, थोड़ा थोड़ा बता के समझा के उसके बाद में Commit violent acts, it's not usually a unique situation. They may have a past of behavior, like cost, performance of the product or service, treatment by staff, repeated delays, and inconveniences. These things don't excuse violence. They should be recognized as possible reasons for an offender's actions. Clients and their friends and relatives may take violent action on workers trying to help them. Sometimes, the event can happen in a single experience with the service. For example, a relative of a seriously hurt person trying to have them cared for at a hospital. In most cases, violence happens after a bunch of smaller conflicts over a period of time. देखिए ना, ये तो कभी कभी देखे होंगे ना. Have you ever experienced or came to know any news? इस तरह की कोई न्यूज़ आपको मालूम होगा ना. कभी कभी हॉस्पिटल में कभी अपना कोई किसी को शरीक कराए थे कहीं पर, यानी तो कहीं पर इस तरह की जगह पे जहाँ हेल्थ केयर में और समटाइम इन अदर प्लेसेस आल्सो हैपेंस. क्या होता, आप वहाँ पर स्टाफ से लड़ लेते, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता. Violence happens after a bunch of smaller conflicts over a period of time. Discrimination and harassment bullying is the need for personal gain and pleasure. It's said that violent acts are committed for their own needs with little to no plan. Discrimination and harassment, bullying is the need for personal gain and pleasure. क्या होता कभी अपने से inferior जूनियर्स को या नए आने वालों को डिस्क्रिमिनेशन में या जो ना ब्लैक वाइट का जैसा फॉरेन में होता है, यहाँ पर भी इस तरह के वर्कर्स जो है आपस में झगड़े होते हैं, लोग ग्रुप बन के. इसको भी जो है ना कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्लान, प्रोसीजर, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए. Random vandalism, destruction of property, is an example. Some robberies happen randomly, in the moment, brought on by opportunity. If there's no staff or valuables are left in an easy-to-reach place, offenders take what they want. Less common angry behaviors include making barricades and hostage-taking. Clients whose minds are affected by drugs or alcohol, or those going through withdrawals, may be violent. It is possible to have a strategy to prevent this, as well as procedures to handle violent situations in case they happen. Incidental violence, like robbery or attacking someone in the workplace, can affect the staff. While some staff may not be physically attacked, they may suffer trauma from the side of it. You may not be able to stop these situations, but you could have procedures in place to minimize the damage. Who is vulnerable? About 2 million American workers are victims of this violence each year. Workplace violence can happen anywhere, and no one is an exception. The best protection employers can offer is to create a zero-tolerance policy about workplace violence against or by employees. The employer should have a workplace violence prevention program, or add information to an existing program, employee handbook, or manual of standard operating procedure. It's important to ensure all employees know the policy and understand that claims of workplace violence will be investigated and dealt with immediately. Employers can also offer protections like the following: providing safety education, like a course for employees to teach them what actions are unacceptable. They'll learn what to do if they witness or endure workplace violence and how to protect themselves. Securing the workplace. Depending on the business, you can install video surveillance, extra lighting, alarm systems, and cut down on outsiders through identification badges, electronic keys, and guards. Providing safes to limit the amount of cash on hand. Keep a small amount of cash in the registers in the evening and late night hours. Equipping staff with cell phones, handheld alarms, or noise devices. Require them to make a daily work plan and keep a contact vehicles properly maintained.